अक्षय, okay, live. Okay. Hello guys, welcome to the session. How are you all? My name is Arvind Sir. Welcome to this session on sets and relations quiz. So this is a grade 11th topic, a comparatively very easy topic for your JEE mains and advanced as well. So JEEt Lo 2020 gang is here or not? Give me a quick shout out in the chat box. And I hope that you guys are enjoying the preparation of JEE. These 2 years going to be the defining year of your life. सो आई होप कि आप पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हो जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे मेहनत करी थी एंड हम लोग जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे मेहनत करी थी एंड देन वी रीच टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री। तो आई होप कि आप भी उसी मिशन की तरफ बढ़ रहे हो और अपना एम बिल्कुल अचीव करके ही मानोगे। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स तुम्हें मुझे बताने हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो डू शेयर इट सो दैट हम इस वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली जरूर सीख के जाएं। मेरा नाम है अरविंद सुथार, मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जेई एस्पायरेंट्स को एंड आई ऑलवेज टेल व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इन 2 सालों में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हो यानी कि ज्यादा घूमते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई ज्यादा करते हो, थोड़े भटकते नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल सबसे जल्दी मिलेगी और आपका करियर सबसे जल्दी सेट होगा। दिस इज द कंप्लीट स्केड्यूल आपका जो हम वेदांतु जेई चैनल पर आप लोगों के लिए कर रहे हैं। दिस इज फॉर JEE 2021 एस्पायरेंट्स और जो जेई 2022 वाले हैं उनके लिए हमारी क्लास हमेशा 7 PM पर होती है। मेरी क्लास कब होती है? टीटी डेज यानी ट्यूसडे एंड थर्सडे को होती है, राइट। और क्विज भी होता है सैटरडे 8 PM को। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट एक क्विक अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो वेदांतु हैज कम अप विथ इट्स प्रो सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर आप अपनी जेई मेन की तैयारी घर बैठ के मोस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, आप आराम से अपनी घर से बैठ के ही अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट, बेस्ट ऑफ इंटेंट here only at Vedantu. What you have to do, you have to go on to this link. The link is also mentioned in the description box. Select your respective grade and the target examination for which you are preparing. Once you do that, in this particular pro subscription, you will have all your live classes and that too interactive. What do I mean by this is quizzes, leaderboards, fun visualizations, daily classes will be happening on the Vedantu platform and dual teacher model for personal attention. एक टीचर आपको पढ़ाएगा और एक टीचर आपके डाउट्स को क्लियर करेगा, राइट। और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपकी पढ़ाई घर बैठ के ही बहुत सारे बच्चों के साथ compete करके आपकी प्रिपरेशन होगी। Assignments and notes will be provided to you. Regular assignments to ensure progress, replays, class notes, study materials, all are available 24/7 and important textbook solutions as well, ताकि आपको कुछ और कंटेंट करने की जरूरत ना पड़े। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस भी होगा जिसके थ्रू आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को लाइक अ बॉस रूल कर सकते हो। कंप्लीट करिकुलम आपका ये रहेगा इस कोर्स का कि 40,000 आवर्स की लाइव टीचिंग होगी, 20+ टीचर्स वहां पढ़ाएंगे यानी एक सब्जेक्ट्स के मल्टीपल टीचर्स होंगे आपके पास एंड दोस टीचर्स विल बी हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ more than 5+ years who are also from IITs and NITs, the most prestigious colleges of this country. Along with this, tests and assignments of 10,000 questions, depending upon which language you are more comfortable in, English or Hindi, you can choose your batch. Hindi means the guys who understand Hindi as well as English, right? So that is also there. Continuous reviews for your areas of improvement. कि आप मैथमेटिक्स में कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, केमिस्ट्री में आपको कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, फिजिक्स के अंदर आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। ऑल दिस इज पॉसिबल एट वेदांतु बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट वी गाइस आर वर्किंग ऑन।
सो दैट भारत का हर एक बच्चा अगर अपने घर पे बैठ के भी या किसी रिमोटेस्ट टाउन में भी बैठा है और वो बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ना चाहता है तो ही और शी कैन एंड अचीव देयर ड्रीम्स, राइट? Along with this, micro and crash course is also available depending upon what you need at what moment of time. तो आपकी प्रिपरेशन एक होलिस्टिकली कवर होती है at Vedantu with this multiple things that are available to you guys. The 1 month subscription for this course is available at rupees 6,999 per month. 3 months subscription is available at 5,999 per month. 5,666 per month. 6 month subscription is available at 4,667 per month. But if you see that 12 month subscription, the subscription is available at rupees 2,650 per month as well. Yes, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एट द अफोर्डेबल प्राइस ऑफ just rupees 2,650 per month, which includes unlimited live classes, test series and analysis, assignments and notes, which all together makes you ready for this competitive examination JEE. Right, so all these are included in the subscription. If you avail this offer now, you will have 15% of discount as well. Use the coupon code ASPRO to grab the 15% discount now. And I will tell you guys, subscribe to this course now if you are preparing for JEE 2021 or JEE 2022, because आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर and you can learn live from home with them. And I have seen यार बच्चों ने, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ही लिया था सिर्फ उन्होंने ही इतना अच्छा कर लिया। तो इमेजिन कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो एंड इफ यू study continuously for this duration that you have before your examination of JEE 2021 and JEE 2022, to imagine how much effects it will have on your preparation, and आप अपने घर बैठे ही अपनी रैंक अच्छी कर सकते हो जेई के अंदर। मूविंग अहेड, जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डोंट वरी, आप वेदांतु जेई चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हियर द टीम ऑफ IITians इज वर्किंग हार्ड सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो बिकम IITians and together we can take you to your aim, and that is to crack JEE, so that once we enter into colleges, we enter into the most respected colleges of this country. And I always tell what, एक अच्छा कॉलेज एक अच्छे ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म आपको हर जगह के लिए ट्रेन देता है, राइट? यही होता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप हर डायरेक्शन में जा सकते हो, अगर वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ये टाइम है आपको उस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम यूज करने का और अच्छे कॉलेजेस में जाने का, बिकॉज वंस यू एंटर इनटू गुड कॉलेजेस you can do whatever you want to in your life. Like I have become a teacher once I graduated from IIT Roorkee. A lot of my friends became civil servants. A lot of my friends went into research field. A lot of them are working in Microsoft, Google, and so on. Depending upon what you want to do in your life, you can. But this is the high time where we need to be a bit more focused and a bit more energetic and a bit more visionary, so that we can enter where we always want to be, right? Yes, तो बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन की तरफ। आज पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही प्रोबेबल है, और सेट्स एंड रिलेशंस जो आपका टॉपिक है वहां से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ओके, this is the question number 1 that you have to do, which is there on your screens. Let's try to solve this question. In a group of 1,000 people, there are 750 people who speak Hindi. So there are number of the students or number of the people who speak Hindi is, let's say, 750. 400 can speak Bengali. Okay, so these are 400 students. Now, if I total number of the people speaking Hindi and number of the people speaking Bengali, now these are coming more than 1,000, but in total only we have 1,000 people. That means there are some people who are speaking both Hindi as well as Bengali as well. Yes, so you have to solve this question
and tell me the correct answer, guys. I'm waiting for your response. Yes, come on. So what has been given to you is there are total number of people who can either speak Hindi or Bengali are 1,000. So first, can you guys use this kind of an equation? और क्या आप वो लोगों का नंबर पता कर सकते हैं जो हिंदी as well as Bengali बोल सकते हैं? Yes. So this is 1,000. This is given to you as how much? This is given to you as 750. This is given to you as 400, and you don't know is number of the guys speaking Hindi as well as Bengali. So from this equation, you guys can find out the number of the people who can speak Hindi as well as Bengali, right? Once you have that, what you want is the number of the guys speaking Hindi only. So number of the guys speaking Hindi only will be what? Number of the guys speaking Hindi minus number of the guys who can speak Hindi as well as Bengali. So you can do this and you will have your answer of the number of the people speaking Hindi. Yes. And similarly, you guys can find out number of the guys who can speak Bengali also only by this particular equation. यस तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आपने ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी किए होंगे एंड डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो. तो टेल मी द करेक्ट आंसर्स गाइस. द गाइस हु कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सॉरी बेंगोली, वो कितने हो जाएंगे? 1150 minus 1000, that is 150. And once you have this number, I think you can put these numbers over here and you can solve your question comfortably. So tell me the correct answers, guys. I am waiting for your responses. तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 750 minus 150, that is 600 हिंदी ओनली. बंगाली ओनली का आंसर कितना आ जाएगा? 400 minus 150, that is 250. And number of the guys who can speak Hindi as well as Bengali are already 150. We have already got this, right? So these are your three answers. How many of you guys got this? Give me a yo in the chat box यार. Easy question है. ऐसे question आपके एग्जाम में बहुत frequently आते हैं and you guys can solve such kind of questions. Okay, let's solve this question number 2. Two finite sets are given to me and they are having number of the elements as m and n. The total number of subsets. Okay, now tell me what is the formula for total subsets of a set having m elements. एक सेट है जिसके अंदर आपके अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने लिखे जा सकते हैं? They can be written as 2 to the power m. These many number of subsets you can write down. Similarly, the set having n elements, the subsets I can write down for that is 2 to the power n. Yeah. Yes. What is the equation given to me? The total number of subsets of the first set, that is 2 to the power m, is 56 more than the total number of subsets of the second set. That means you can write down this equation and now you can see which of the following values of m and n are satisfying your answer, and that will be your answer, right? All these things I have taught you in 2 sessions. I have taken NCERT sessions for you guys as well as JEE sessions, and in both the sessions I have covered this thing. So definitely you guys can solve this question by putting and verifying the values which will be satisfying your question. So I think C for Calcutta is satisfying because 2 to the power 6 is 64 and 2 to the power 3 plus 56 is again 64. Hence C for Calcutta is going to be your answer. तो किस किस का आ गया देखे जरा इन द चैट बॉक्स. किस किस का आ गया जल्दी से मेरे को बता दो. जल्दी से मेरे को बता दो. इसका तो आंसर ही रिवील हो गया. चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना. जब आंसर रिवील ही हो गया तो फिर बचा ही क्या. चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइस. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन. ओके, यस, ये आपका रिलेशन है जिसकी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है. चलो देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है. कम ऑन गाइस, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है.
X and Y are following this relation. X and Y have been given to me as a natural number and X is given to me as less than 6. Okay. So from here I know that X, from these two things, I can say that my X can be 1, 2, 3, 4 or 5 because these are only natural numbers which are lesser than 6. But what is given to me that my Y also needs to be a natural number. So I will see that out of what value of X which I put over here, my Y also comes out to be a natural number. Let's find out that one. When you put X equal to 1, your Y is coming out to be 1 plus 6 by 1, which is again a natural number. Okay. When you put X equals to 2, your Y is coming out to be how much? Again a natural number, right? Yes, 5. Okay, when you put X equal to 3, what is the value of your Y coming? Your Y is coming out to be 3 plus 6 by 3, again an integer, that is 5. Okay, when you put X equals to 4, your Y is coming out to be this, which is not an integer, right? So you won't include this. Similarly, when you put X equal to 5, your Y will not come out to be an integer from this equation. That means these values of X are not satisfying your relation. So these are the three values of X satisfying your relation, and you need to find out domain and range of the following relation. Now, domain means the values of the expression which is written first, that is X. So what are the values of X which are being satisfied? X equal to 1, X equal to 2 and X equal to 3. So this will be your domain, and what are the values of Y satisfying? That will be your range. So 7 and 5 going to be a range, and 1 comma 2 comma 3 going to be your domain. Hence your answer has to be B for Bombay. Yes or not? How many of you guys have got the answer of this? जल्दी से मेरे को बता दो यार चैट बॉक्स के अंदर किस किस का आंसर बी फॉर बॉम्बे आया. इजी क्वेश्चन है. देखो x equal to 4 can never be in your domain because at x equals to 4 your y is not coming out to be a natural number. इसीलिए आपका x equal to 4 नहीं हो सकता. So moving ahead, and this is the solution that I have attached for all of you guys as well. You guys can see this. Okay, I will rewrite this expression because this expression may sound a bit confusing to some students out there. So I will rewrite this expression for you once again over here. This highlighted one I'm writing down over here. Yes, everyone try to solve this problem. Come on, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. This is a question which has been asked in JEE Main 2019. Okay. Yes, x square minus 5x plus 6 ऐसा करके लिखा हुआ है. So can you guys, okay, x is belonging to z, z means integer. So can you guys find out the integral value of x which is satisfying this particular equation? You guys can rewrite your expression like this. Yes, that means if you compare the base is same, then the power should be equal. So you can say from this equation that your x can be what? From this equation, you can say that your x can be minus 2, 2 and 3. Because these are the values which you put in this expression and you satisfy your equation. Okay, so your A set is given to you as what? Your A set is given to you as minus 2, 2 and 3. Okay, let's go for the B set. The B set is something which is satisfying this equation. So let me rewrite this, guys. Yes, minus 3 से बड़ा है 2x minus 1 और 9 से छोटा है. Now how to find out the value of x which is satisfying this equation? I'll do what? I will add 1 to all the three sides. The sign of inequality will remain same. I can rewrite this expression as this. Yes, students. Then if I divide all the three sides by 2, the sign of inequality will remain same because I'm dividing by a positive number, and hence I can rewrite this expression as minus 1 से बड़ा और 5 से छोटा. Now it is also given to me that my x is an integer. So what are the possible values of x that can come from here? 0, 1, 2, 3
and 4. 0, 1, 2, 3, and 4, right? Because you need to write down all the integral values which are coming between -1 to 5. So 0, 1, 2, 3, 4, these are the values possible. Yeah. Okay, so if I write down our B set, let me highlight this expression so that you have some clarity in this. Yes, this is our A set, and I will write down B set for everyone once again over here. And our B set is equals to 0, 1, 2, 3, 4. This is our B set. Yeah, so I will highlight this. Now, what is the question given, guys? Read the question carefully because I know you guys can do the rest of the question. The number of the subsets of A cross B. First, tell me, can you guys write down the number of the elements which will come in the set A cross B? Yes, they are nothing but number of the elements in set A times number of the elements in set B. That is 3 into 5. So the number of the elements in the set A cross B will be 15. And how many subsets if I can write down if a set has 15 elements in it? The number of the subsets will be 2 to the power 15. Hence, your answer will be A for Arvind Sir. Yes, got this or not? Your A set is having 3 elements. Your B set is having 5 elements. So number of the elements in the set A cross B will be equal to number of the elements in set A times number of the elements in set B, that is 3 into 5, 15. And if a set has 15 elements, how many subsets I can write down? I can write down 2 to the power 15 number of subsets, and that is A is our correct answer. Now, this was a problem asked in JEE Main 2019. So I hope that if you find such kind of problems coming in your JEE, you guys can definitely solve these kind of problems so that when your result comes, you guys kill the examination like a boss. Yeah? Yes, absolutely right answer. A for Arvind Sir is the correct answer. Now let's do this question, question number 6. A set is given to you, B set is given to you, and your X and Y, which are X comma Y, is forming a relation R where X is from set A and Y is from set B, and X is always less than Y. Then you need to find out R inverse. Let's first write down R, relation R लिखते हैं पहले. The moment we will be able to write down the relation R, we can easily write down R inverse as well. तो पहले R लिखते हैं, ठीक है? R relation ऐसा है, X comma Y है, where X is from this set and Y is from this set, such that X is always less than Y. So when you are taking, let's say, X as 2, you can't take Y as 1 because your X should always be lesser than Y. So when you are taking X as 2, you cannot take Y as 1, but you can take Y as 3, as well as you can take your Y as 7. Yes or no? Yes, sir. Okay. When you take your X as 3, you cannot take your Y as 1 and 3 because you have to take Y always greater than X. तो अगर X ही तुमने 3 ले लिया तो Y 1 और 3 में से कुछ नहीं ले सकते, तो Y के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बन जाती है, that is 7. Okay. When you take X as 4, you have to take Y more than 4, which is only possibility 7 coming. Hence, this is your relation R. Once you write down your relation R, how do you write down R inverse? How do you write down the inverse relation? You can write down the inverse relation by interchanging these two values every time. Yes or no? So just do this and tell me the correct answer. Your answer will be 3, 2, 7, 2, 7, 3, and 7, 4. This has to be your answer. So what is the correct answer, guys? Tell me. 3, 2, 7, 2, 7, 3, and 7, 4. Hence, C for Calcutta is your answer. Acha, if I ask you, is this R inverse a relation? Is this R inverse a relation? What will you do? You will bring the input gang for whatever is written first. So this is 3 and 7. Because if you see in this problem, this things whatever are written first, that is your first set, and whatever is written later
is your codomain. So your codomain will be what? This is 2, this is 3, and this is 4. Since this 3 is killing this guy 2, and this 7 is killing 2 as well as 3 as well as 4. So this is Rajnikant because he is hitting multiple bullets, and we know that function के अंदर रजनीकांत आता नहीं है, राइट? तो 7 की एक ही इमेज होनी चाहिए, बट 7 की तो इतनी इमेज है, तो आर इनवर्स एक फंक्शन भी नहीं होगा। दो 3 एंड 7 जो भी आपकी डोमेन में है उसका एक इमेज बन रहा है, लेकिन एक से ज्यादा इमेज भी बन रहे हैं, इसीलिए ये आपका रिलेशन नहीं है, बिकॉज सॉरी फंक्शन नहीं है। बिकॉज फंक्शन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी? अपनी आर्मी में से एवरीवन हैज टू शूट एंड एवरीवन हैज टू शूट 1 बुलेट ओनली। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप हमारे बेसिक लेक्चर्स देखोगे तो आप इस चीज को ओरली कर लोगे। तो इसका आंसर सी फॉर कैलकाटा हो जाएगा। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 and you have to solve this problem, guys. A union B is given to you. Number of the elements in set A is given to you. Number of the elements in set B is given to you. What you need to find out is A intersection B. So I think this is a very laddu problem. So I think everybody can find this out. So everyone knows this equation. Let's put it over here, 21. यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 15, और this is the only unknown we have. So I think from this equation we guys can find out A intersection B very easy. Now what is the meaning of A minus B, guys? Do you remember what I told you? A minus B का meaning क्या होता है? The meaning of A minus B is remove the things which are also coming in B. Remove the things from A which are also coming in B. I will write it down for you over here. A minus B means, yes, तब तक बाकी के बच्चे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? Yes, A minus B means remove those things from A which are also lying in B. Yeah, this is nothing but your A minus B. So first calculate A intersection B. उसको calculate करेंगे तो कितना आ जाएगा? I think 25/4 is coming. Okay, this is done. Now if you want to find out A minus B, so then from A you have to subtract, you have to remove those things which are also coming in B. That means you have to subtract A intersection B. Yes or no, guys? From A you need to remove those things which are also lying in B. That means which are common in both A and B. Hence you can write down the answer as 10 minus 4, that is 6. So what is your correct answer? 4 and 6? Yes, D for Delhi is the correct answer. Yes, everyone? How many of you guys know about this concept? किस किस का ये आंसर करेक्ट आया? जल्दी से मेरे को बता दो यार। मेरे हिसाब से D for Delhi is the correct answer. Yes, it is. कितने बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर आ गया? जल्दी से मेरे को बता दो चैट बॉक्स के अंदर, and then we will move on to this next question that is there on your screens. Yes, there are total 450 people given to us. उसमें से 110 guys are playing cricket. तो क्रिकेट वाले कितने हैं? 110. Okay, 160 guys are there who are playing tennis as well. Okay, these are the number of the guys playing tennis. Now there are some guys who are playing cricket as well as tennis. So ये कितने दिए हुए हैं? 70. So can I find out the number of the guys who can play either cricket or tennis? Yes, I can write it down as 110 plus 160 minus 70. This is the equation we are using again and again. So this is how much coming? 270 minus 70, that is 200, right? Is this 200 coming? Yes. Okay. Total people are 450, and out of which 200 people are playing either cricket or tennis. So remaining guys will not be playing anything, right? वो लोग आलसी वाले लोग हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, बिकॉज क्रिकेट यूनियन टेनिस का मीनिंग क्या है? कोई भी एक गेम खेल ले, दोनों भी खेलेंगे तो चलेगा। तो एक भी नहीं खेलने वाले क्या होंगे? 450 minus 200, that is going to be your
answer, that is 250. B for Bombay is going to be the correct answer of this question. How many of you guys got the correct answer? Tell me in the chat box. I'm waiting for your responses. Yes, B for Bombay is the correct answer. This is the solution also. You will find in the PDF, which will be attached below the video once the session will be over. Right? Yes. So I have told you that if you are interested in learning and preparing for JEE, definitely you should go ahead with the pro subscription, because I have seen guys who have joined this course, because I'm taking one batch as well. So the guys who have taken this course are doing great. Earlier they were not knowing कि यार syllabus में इतना कुछ है क्या, but now they know what is exactly there in the syllabus, how they have to cover, and how they will score maximum in their examination, right? So batches are going on. You can go onto this link and select your respective class and your target examination, and you can learn at Vedantu with live interactive classes. Assignments and notes will be provided, test series and analysis, all you can access from your home, and that too live and interactive teaching style, quizzes and leaderboards you can be participating in. Entire classes will be on the Vedantu Wave platform. Dual teacher, one will be teaching and one will be there to clear your doubts. Regular assignments to ensure progress, replays, class notes, study materials, everything from your home. Yes, you can have tests as well, which are aligned to the way JEE is asking questions these days. Complete curriculum will be of 40,000 hours. अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे ऐसे घर से पढ़ने की इच्छा, मतलब अगर मुझे घर से पढ़ने का मौका मिलता, तो मैं डेफिनेटली घर से आराम से पढ़ लेता, क्योंकि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है यार. आई नो कि ये टाइम थोड़ा मुश्किल चल रहा है, राइट? कोरोना वायरस का आउटब्रेक का टाइम है, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट आप अपनी पढ़ाई मत रोकिए. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, क्लास 11th और क्लास 12th, दीज 2 years डिफाइन कि आप 2 साल बाद कौन से कॉलेज में जाने वाले हो. तो अगर आप जेई एस्पायरेंट हैं या नीट एस्पायरेंट हैं, तो बच्चों मैं कहता हूं कि आप अभी पढ़ाई करिए. अगर आप कॉमर्स के एस्पायरेंट है तो फिर भी चिल है ना, क्योंकि कॉमर्स वाले भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और कुछ बायो वाले भी मैथमेटिक्स लेते हैं. तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए फिर भी चिल है, क्योंकि उनका सीपीटी वगैरह बाद में होगा. बट जेई और नीट के लिए जो पढ़ रहे हैं बच्चों, ये 2 साल आपके लिए बहुत जरूरी है. इन 2 सालों में मेहनत करो पूरी, और जी भर के मेहनत करो, क्योंकि 2 साल बाद जब आप किसी कॉलेज को चूज कर रहे हो, तो आपके पास चॉइसेस हो कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, राइट? सो 20+ टीचर्स आपको वहां पे पढ़ाएंगे. 5+ ईयर्स से एक्सपीरियंस से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है. 10,000 क्वेश्चंस, इंग्लिश और हिंदी, डिपेंडिंग अपॉन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. Continuous reviews of your areas of improvement. All this is available at different plans of the months. If you take 1 month plan, you can have it at rupees 6,999 per month. 3 month का प्लान आपके लिए 5,666 पर मंथ पर अवेलेबल है. 6 months का प्लान यहाँ पे अवेलेबल है. एंड अगर आप 12 month का प्लान देखोगे, तो इट इज अवेलेबल एट जस्ट रुपीज 2,650 पर मंथ. यस, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंटायर असाइनमेंट्स, एंटायर आपका नोट्स, आपका क्लासेस, आपका important textbook solutions of all the 3 subjects, physics, chemistry, mathematics, आपकी टेस्ट सीरीज, all is included in this. And अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो look how cheaper it becomes, right? So इसमें भी अगर आप ये सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं, तो you guys can have 50% discount. So go onto this link if you are interested and use the coupon code ASPRO to grab this discount. Yes, एंड अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे, तो आपको 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा. तो पेमेंट करने से पहले एक बारी ये जरूर देख लेना कि आपने कूपन कोड लगा लिया है, फिर बाद में मुझे मत कहना, ठीक है? इतना चिक चिक के बोल दिया है मैंने कि पेमेंट करने से पहले कूपन कोड जरूर लगा लेना. ASPRO, which is on my name, Arvind Sir, PRO. Pro is the course of the name of the course, and AS stands for Arvind Sir. Okay. जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज हम जानते हैं यार कि, और मानते भी हैं इस चीज को कि यार पढ़ाई किसी की केवल पैसों की वजह से नहीं रुकनी चाहिए. तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो डोंट वरी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. वहां पे असाइनमेंट्स, नोट्स एंड डेली अपडेट्स ऑल आर अवेलेबल, सो दैट यू कैन गेट टाइमली नोटिफिकेशंस एज वेल, और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. वी गाइज आर वर्किंग ऑन अ कॉज एंड विद अ कॉज, एंड फॉर यू गाइज कि आप जेई का एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर करके आओ. और मैंने पहले भी कहा है, आई ऑलवेज वेट फॉर दीज 2 words फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, एंड दैट इज फोड़ दिया. तो हम आपके इन्हीं शब्दों का वेट करेंगे जब आप अपना जेई का एग्जाम देके आओगे.
एंड दैट इज फोड़ दिया, दैट मीन्स नेल्ड इट। या तो वीडियो को लाइक करो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और पढ़ते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और एंजॉय करते रहो, बिकॉज ये जो टाइम है इस टाइम का हमको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, ताकि 2 साल बाद जब हम अपना कॉलेज चूज करें तो हमारे पास चॉइसेस हों कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये नहीं कि जो हमें रास्ता दिखाए हम वहां पहुंच जाए, नहीं, हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, बिकॉज हम अपनी लाइफ खुद बनाएंगे और खुद लाइफ बनाने के लिए हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, राइट। सो पढ़ते रहो, मजे करते रहो, एंजॉय करते रहो, क्योंकि ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ये फिर से नहीं आएगा, तो इसको एंजॉय भी करो और पढ़ते भी रहो, हर एक चीज करो, बिकॉज दिस इज लाइफ एंड लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस लाइफ। See you in the next session. Bye bye. Take care. Love you all. Alvida.